Topic is a classification. There are millions of living organisms on earth और it is impossible कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी ज़मीन में हमारी कायनात में पाए जाते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि उन तमाम को जो है वो क्लासीफाई किया जाए, उन तमाम की जो है वो कैटेगराइज किया जाए, उन तमाम को नेमिंग किया जाए। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है उनकी नेमिंग के लिए एक ख़ास ग्रुप्स बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को जो है जो और मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ दे आर ग्रुप्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज, स्पेसिफिक ग्रुप्स, एंड दिस सिस्टम of putting them in a groups is called as a classification. There are millions of living organisms on earth. It is impossible to name them without putting them into groups, and this is called classifications. Biologists try to classify living things in a meaningful way. जब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज विच स्टिल यूजफुल टुडे, तो क्या चीज़ जो है, क्या क्राइटेरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए? इट इज़ डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज यानी उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो देखे जाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर एक से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं, उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। यानी कि वी कैन से द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एज वेल एज ऑन देयर डिफरेंसेस। In biology, however, a natural system of classification is used, reflecting the origin or evolution of the organisms and providing easy reference for the identification of the organisms. जो आजकल बहुत जो है, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है In biology, however, a natural system of classification is used, reflecting the origin or evolution of the organisms and providing easy reference for the identification of the organisms. बायोलॉजी में जो सबसे कॉमन मेथड जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है वो एवोल्यूशनरी, यानी कि ऑन द बेस ऑफ डीएनए जो है वो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रुपिंग की जाती है और उनको ग्रुप्स में रखा जाता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉमन, कि यानी कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ और एवोल्यूशन की बुनियाद पे जेनेटिक्स की बेस के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। ऑब्वियसली जो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ एक सी होंगी, और उनको सेम ग्रुप्स में और एक ही ग्रुप में जो है उनको एक तरह की उनकी ग्रुपिंग होगी, और दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। और इस तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म जो है उसके करने में आसानी हो जाती है। आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एक क्लास का एक ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग जाए तो उस क्लास के बाकी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हमें आसानी से पता लग जाती हैं, क्योंकि दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, सेम क्वालिटीज़, सेम सिमिलरिटीज़, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ दे आर क्लासिफाइड इनटू सेम ग्रुप्स, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। How we classify the organisms today? Most biologists recognize the 5 different kingdoms of the living organism. These are सबसे जो आज का जो सिस्टम जो है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो था वो 2 किंगडम सिस्टम के ऊपर बेस करता था, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड थे। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 5 किंगडम सिस्टम है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज, एंड इसमें अगर हम देखें सबसे पहले आते हैं प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड है। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोटिक्स। जितने बाकी के 4 किंगडम्स हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स में प्रोटिस्टा, a collection of a single celled organisms, and hence simple multicellular ones like seaweeds. Now next is the fungi, the mushroom, जिसमें tetrad, molds sector include है, plantia as the name indicates the green plants, and animalia as the name indicates the animals. This is a 5 kingdom system which is a common nowadays, and in which first of all the 5 kingdoms are include prokaryotes, in which bacteria include. Number 2 is the protista, number 3 is the fungi, number 4 is the plantae, as we know कि इसमें plants include होते हैं, और animalia इसमें animals include होते हैं।
In addition, there are the viruses, the smallest organisms. They are on the borderline between the living and the non-living world. अगर हम बात करें इसमें वायरसेस की, तो ये भी एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ऑल लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इधर अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिन्हें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और वो सिंगल सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वो होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और विच आर द मल्टी सेलुलर एंड विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, दीज आर यूनिसेलुलर, और जो यूकैरियोटिक है इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Living things are first of all divided into a few kingdoms. First of all, life domain is started, then the kingdom, यानी कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड into two basic kingdoms, that is the plant kingdom and the animal kingdom. Within each kingdom, the organisms are further classified into phyla और phylum, यानी कि नेक्स्ट किंगडम के बाद जो उसे छोटी क्लासिफिकेशन जो बनती है ऑर्गेनिज्म की, दिस इज अ फाइलम। Or divisions in the class of plants, each phylum consists of organisms that are basically similar, although their similarities may not be obvious at first sight. जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में रखे जाएंगे वो these are genetically identical. Within each order, the phylum is made up of the classes. Now next is a class. The phylum is made up of classes and the classes फॉर्म द ऑर्डर्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उसकी छोटी जो है कैटेगराइजेशन, यानी कि उसको मज़ीद ग्रुप्स में या मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। इट्स ऑर्डर, विद ईच ऑर्डर आर द फैमिलीज, हियर वी कैन सी दिस इज द फैमिलीज। इन ईच फैमिलीज ऑन द नेम ऑफ सेट आर असेंबलीज वेरी क्रॉस, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे से क्रॉस होंगे। और नेक्स्ट इज अ जीनस एंड नेक्स्ट वन इज अ स्पीशीज। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऑब्वियसली कि हम जितने भी मिलियन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हमारी कायनात में पाए जाते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करना या उनको स्टडी करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो इस मकसद को आसान बनाने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए साइंसदानों ने जो है वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की है, यानी ऑर्गेनिजम्स को वेरियस ग्रुप्स में रखा है ताकि उनके करेक्टरिस्टिक और सिमिलरिटीज़, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको उनकी ग्रुपिंग की जा सके। और इनमें सबसे पहले जो है वो लाइफ स्टार्ट विद अ डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज जो है वो इसमें इंक्लूड है कि डिफरेंट ये नेमिंग का तरीका, नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सी क्वालिटीज़ होती हैं वो ना सेम किंगडम में आते हैं, और जनरली इसमें दो किंगडम सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम। और नाउ नेक्स्ट उससे जो है ग्रुपिंग की जाती है सिमिलरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर। नेक्स्ट इज़ अ फाइलम, देन नेक्स्ट वन इज़ अ क्लास, नेक्स्ट वन इज़ अ ऑर्डर, and next is family and species and so on. As we go down the scale of classification in this way, and this is the scale of classification as we go down like this way, we will find that the resemblance between the organisms become much closer. For instance, it is easy to distinguish one family from another. It is also very easy to separate the different genera, but different species may be more difficult to separate. जितनी ग्रुपिंग हम नीचे आते हैं उतनी उनके अंदर सिमिलरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। नाउ द सब फाइलम वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेटा और
The subphylum vertebrates or vertebrates or vertebrata is divided into the 5 classes. Now the phylum all includes divided into the invertebrates as well as vertebrates. The subphylum vertebrates is divided into 5 classes, namely Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. यानी कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनको 5 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिनमें एम्फीबियंस आते हैं, फिशेस आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एज वेल एज बर्ड्स आते हैं और मेमर्स, और जिनमें ह्यूमन बींग जो है वो इंक्लूड हैं। और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। जबकि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, दीज आर द डेट ऑर्गेनिजम्स विच डोंट हैव अ वेल डिफाइंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम, जिन्हें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। All of the phylum except the phylum Vertebrata or phylum Chordata all include all the invertebrates which don't have a spinal cord or spinal column, like the phylum Porifera, Nematode, Annelida, Molluscus, Arthropoda, Echinodermata. These are the all phylums which is the class of the invertebrates, and the invertebrates or the vertebrate includes as I already mentioned, includes amphibians, reptiles, birds and mammals, etc. Here we can see the phylum. The similar organisms are put in the same phylum. And now next is a class. Next one is a order. Next one is a family. And next one is a genus. Here we can see the 5 kingdom classification system. Here these are the organisms which are basically divided into procreates as well as eukaryotes. In the procreates kingdom, Monera include, in which the bacteria is included. On the other hand, we see the eukaryotes, in which are unicellular as well as the multicellular organisms are included, in which we can see here the protista, plantia, fungi, animalia. As we know, the animalia means animals, fungi और protista और plantia means plants. यानी कि organism जो है इन द 5 kingdom classification system 5 ग्रुप्स में या 5 किंगडम में जो है वो डिवाइड्स हैं, और इनमें किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोक्रेटिक्स हैं, यानी कि दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और दीज आर यूनिसेलुलर। और बाकी जितने भी हैं प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमिलिया, दे यूक्रेटिक्स हैं विच मे बी यूनिसेलुलर एज वेल एज अ मल्टीसेलुलर, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. Here we can see a flow chart in which the 5 kingdom classification system is given as. Five kingdom classification system. This 5 kingdom classification system is proposed by the Robert H. Whittaker, as we can see in the 1969, in which he put the organisms into 2 categories, procreates and eukaryotes. Procreates include the kingdom Monera. Kingdom Monera includes bacteria.
Eukaryotes in which are unicellular as well as multicellular organisms are included. Unicellular are the kingdom Protista, and as well as if we see the multicellular, these are the Animalia, fungi and Plantae. This is a five this is a system proposed by Robert H. Whittaker. He put the organisms into the procreates as well as eukaryotes and further divided into Monera, Protista, Plantae, fungi or Animalia. In animals are include fungi, Plantae, which are the heterotrophs, or Plantae. These are the autotrophs. And Protista or Monera, in which bacteria is included. Here it is to be explained what is the term heterotrophic or the phototrophic. As we know, Plantae are the phototrophic because they form their food by the photosynthesis. So these are called as a phototrophic, as well as fungi are the heterotrophic because they cannot make their own food, and one are the they take their food from the other ones. So these are called as a heterotrophic, or Plantae are called as a phototrophic. They may make their food themselves, or Animalia as animals. Obviously, these are also dependent on the plants for their nutrition and the food. Here is a five kingdom classification system. We can see here this is based on the cell type, unicellular or multicellular, nuclear membrane, mitochondria, chloroplast, as well as the cell wall. Here we can see the five kingdom classification system. ये जो है उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिवन सेल टाइप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. एज वी कैन सी इन द किंगडम मोनेरा, इसमें सेल टाइप जो है प्रोक्रेटिक है. दीज आर द यूनिसेलुलर as well as nuclear membrane absent because they are prokaryotic, or mitochondria also absent, or most absent photosynthetic membranes present in some types, और cell wall जो है non cellulose polysaccharides, some amino acids. And when we see the Protista, now next come to the kingdom Protista, and these are eukaryotics and unicellular, or nuclear membrane present, or mitochondria present, or chloroplast mostly absent, present in some types, or cell wall present in some forms with various types. Here we can see the three more categories of the five kingdom system: fungi, Plantae, or Animalia, as we can see here. And fungi are eukaryotic, or Plantae are also eukaryotic, and Animalia are eukaryotic. Animalia mean animals, Plantae means plants or fungi. Or these are the fungi multicellular, plants are multicellular, or animals multicellular. If we talk about cell wall, chitin and non-cellulose polysaccharides, इनकी cell wall बनी होती है. In the case of fungi, we see, और in the plant cellulose और the polysaccharides से इनकी cell wall होती है. और animal जो है they are dependent on food on the plants, so इनमें these are called as हेटरोट्रोप्स, और इनमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है. सेल वॉल जो है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जबकि इसमें जो है एनिमल्स, इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल्स नहीं होती हैं. When we talk about the other three kingdom, fungi, Plantae, Animalia, these are all eukaryotic and as well as a multicellular, और इनमें सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो हैं, these are all present in these. And in the fungi, cell wall is made of chitin and the non-cellulose polysaccharides.
Only in the Parentia servor is present, which is made up of the polysaccharides, and in the Animalia servor is absent. और पौधों में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती. Here is the most important thing is the reproduction. The reproduction of new offspring is a process by which genetic information is passed from one generation to the next. is called as reproduction. reproduction एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके लिए से कोई भी जानदार इवन के पौधे जो हैं अपनी कंटिन्यूटी को अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं, जिनसे द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक information is passed from one generation to next. For example, your mother and the father passed their genetic information on to you, and thus reproduction ensures the continuity of the species, the continuity of the life processes. Adaptation is any characteristic of organism that in the environment in which they are living improve their chances of survival and so enables them to leave behind offspring. For example, fish that are more streamlined are better adapted to life in rivers than fish which are not. Adaptation वो प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए से कोई जानदार जो है उसको ये इस चीज़ का ये चीज़ सीखता है कि हाउ टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट की किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसमें क्या स्पेसिफिक करेक्टर्स होने चाहिए विच मेक द फिट इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. Here we can see the diagram, which is the image first of all. Here we can see the five kingdom classification system, जिसमें the virus are includes and procreates, bacteria, as well as eukaryotics, protista, fungi, as well as the plants and animals also includes. Here we can see the plants. The plants are further divided into bryophytes, ferns, gymnosperm, as well as angiosperms. Or angiosperms are there two types. So here we can see flowering plants are divided into the monocot as well as the dicot. And if we see the animalia, here is the kingdom. Animals in which the following phylums are found: phylum Platyhelminthes, flatworm, nematodes, roundworm, segmented worms. Here we can see the phylum Vertebrate or chordata, in which the following classes are Pisces, which are called fishes, amphibians, reptiles, aves, birds, or mammals are found. So this is the five kingdom classification system, which is further into divide into the phylums, and phylums are divided into classes and so on. Five kingdom जो है वो first kingdom, and this is divided into phylums. Phylum further is into divided into classes. Classes further divided into order. Order is into families. Family into genus, and genus are species. And this is all of the natural classification, which each level having a specific or starting from the largest grouping. These go into the following order. Here we can see the system of classification, which is number first is the kingdom, then the phylum, class, order, family, genus, and species. We see the natural classification system. This is the system of the classification. Then a grouping of organisms. First, the organisms are grouped into the kingdoms, two main kingdoms, plants and animals. Then this is divided into phylum. If plants be as well as the animals both are divided into the phylums. Plants are divided into brophytes, ferns, gymnosperms, as well as the angiosperms or the flowering plants. And the animals are divided into phylum Porifera, phylum Platyhelminthes, nematode, Annelida, molluscus, arthropods, Echinodermata, and in the end phylum Chordata, in which the following classes are found: fishes, amphibians, reptiles, birds, and the mammals. And then these are further divided into orders. Orders are in the families, families in the genus, and genus in the species. And this is the system of the classification, which is based on the grouping, and the grouping is done on the base of their genetic properties, on the base of the genetics.
द पर्पज़ ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ना ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासीफाई की जाते हैं और उसके वजह से बेसिक पर्पज़ होता है फॉर इजी रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के बाहम जानदारों के दरमियान जो तल्लुक़ है उसकी वजाहत की जा सके, उनके आइडेंटिफाई की जा सके और उनका पॉसिबल ओरिजिन जो है वो डिस्कवर